हाय इंजीनियर्स, कैसे हो आप? हाय guys, hello. Today we are going to create this video for the 2 to 3 year of experience or 1 to 3 year experience. It will help you a lot, guys. I will share 40 questions which is continuously asked by the interviewer for the QA profile. Guys, I just want to say it's depend on the profile which the interview you are attending. If you are attending interview for the estate profile or the automation profile, the question will be changed. But if you are attending profile for the QA profile or a QA profile, so question will be same. I'm damn sure I had attended approx 30 plus interviews, so I observed this is very common question which is asked by the interviewer. So that is I'm going to share with you. Please guys, I have a one request to you. Please like, share, subscribe this channel. I will upload more and more questions, kind of interview questions, like question banks. So please like and share. If this video help you lot, so please guys comment. And if you before the interview you are watching my video, please like, share and subscribe and comment also in comment section. If you have any guidance, any kind of support from my side, so please you can share your feedback or any point of view over my official id sdatacademy@gmail.com. You can find out that in description, channel description as well as video descriptions. I will share the same. Let's go ahead, guys. I will answer, although try to answer questions of all each question, but due to the time foundation I will try from uh, cover all the questions. If one more thing I just want to share, guys, whatever answer I will share with you, that is my own experience. You can find out answer of that question over the Google, because if you will learn any questions or any answer of a question in a proper format, then you can answer easily. But I will share my own experience in the normal term, so that you can understand or grab that information easily. Okay guys, thank you. Let's start from the question first. I Before the starting question, I just want to share, guys, if you are attending questions for the QA profile, so they will ask some question from the Java, or most of the question from the daily activities like Scrum call, Jira, product, how you are working, like that. If you are basically focusing on the automation profile, they will ask more and more about the framework, what the framework you are using, what the language you are using, how you are implementing your script, how your jobs is working, jobs like smoke, sanity is working, how you are maintaining all those things. They will ask from there, from starting point. But we are going from the QA profile or mix with the QA and automation, so all the question from there. So let's start. This is very minor, just like very less information. But if you are good with the Java, so you should explain in a depth with the example, guys. I'm just sharing my point of view. What is the constructor or abstraction? This is not enough statement for interview. I'm just recalling your point if you are good aware with the ops. So constructor is the always called by its call name, is the call itself, like that class you have declared the class is test. Let me a moment. Class if you created the class public, and we will call the constructor like that. Constructor is always called by the class name and its class itself. A constructor is used to initialize a object, not build object. Yes, what it will, a constructor used to initialize an object, not build the artifact. As we all know, Asta class also do have constructor. Asta class also do have a constructor. So if don't define any constructor inside the structure class, then
GVM will give a default constructor to our struct class. What is happening is there कि हमें यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट हैव अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड द abstract क्लास. abstract क्लास में हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते, और जो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू द abstract क्लास, दे विल प्रोवाइड. JVM क्या करेगा, दे विल प्रोवाइड द कंस्ट्रक्टर टू abstract क्लास. सिंपल है कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेते हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, हमें यहाँ ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं. यहाँ कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, नॉट बिल्ड ए ऑब्जेक्ट. हाँ, ऑब्जेक्ट को that is this is the construct. If we want to know to define the user defined constructor like constructor with the argument or any kind of constructor inside the abstract class, or should follow the given parameters. Like if you want to parameter within constructor, so you can define like that, but you will before mention int, then it will fetch your value accordingly. Okay, let's have the abstraction. Yes, abstract class. In abstract class, we have abstracts and non-abstract method also. Abstract class can we have abstract and a non-abstract method. It must be declared with the abstract keyword. It must be declared with the abstract keyword. It can have abstract constructor. It can have a constructor static method. It can have a final method and prevent child class of abstract class not to change the body of methods. The abstract method contain no body, or in simple words, you can say that you cannot define the abstract method inside the abstract class. We can define an abstract method inside the derived class of its abstract class. I will give you one example, guys. You will understand better. See, guys, the class 1 abstract class contain we have initialized the a integer, a variable, and one of the constructor, and we call the current instance itself, it is calling itself a, this one. And abstract multiply int val a, this is the method, blank body, empty body method, and class and class gf. We are using the abstraction. We have a class extending the above class 1, extending using the extend keyword with the contain. Contain is what, this one is the class contain, and we are gf is the class which we have, then we are extending with the contain. If you have aware of the inheritance concept, so there we have options like we use the inheritance, but we are extending the contain class and constructor of the child class gfg constructor, this one, and we are using the refer the parent class super 2, this one int 2, and defining the method abstract method. We are defining the method and we are calling the returning value of the same instance, return this dot a multiply value, and class 3. In this manner we implement the abstract method, abstract class and method also. Move in the second question, guys. Second question is the what is SDLC and what is the STLC. This is very common question, frequently asked by interviewer, because उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों words similar हैं, but nothing like that. Both are word or both are term and full form are different, and we use both term in a different manner. SDLC is basically is the whole development process, but STLC is all about the quality phases, software testing life cycle phases. How we can in the SDLC we have, there are the 5 phases, or STLC there are 4 phases. SDLC like information gathering, designing, implementation, testing, uh, and testing, then production or live the product in that manner. But SDLC is all about the information gathering, understanding, and test scenarios, then testing the application or features which is implemented by the dev team, and then we will move ahead with the then production. This is all about the SDLC.
Under the SDLC, one more phase is also maintenance. So in before the last one, like prod, so we production or after production or before production, we use maintenance in our SDLC also. Next, go ahead with the next question, guys. Third question. Define your role and responsibilities. Always, guys, whenever you start your role, responsibilities, and project, define your role, responsibility, and job and about the organization. Please start like this. Hi, I'm XYZ. I'm working in this organization, and in this organization, and there are the 710 member in my QA profile, or 7 10 member in that my team member. I'm working on this XYZ project. There are following automation. We are following, or we are maintaining automation jobs and manual functional performance testing uh, according to user stories. So my basically my role is I'm take caring the user stories and UAT points and feedback from the product team. UAT points, and I have a knowledge about the Java and Selenium. We are maintaining the jobs, smoke and sanity jobs parallelly, apart from the tickets. So you can explain like that. It will help you to achieve your job. Thank you. What is regression testing? Guys, regression testing is all about the whenever product or functionality done by developers, we perform the end-to-end testing of application. So test whatever they have implemented, left of the functionality is working properly or not. It is all about the regression testing. We check the left of the functionality working fine or broken by the code implement code. Dev team, implement by dev team also. We will move ahead the next question, guys. Next question is the different methodology in SDLC. Waterfall model, guys. Waterfall model is all about like we are gathering information from user, we are implementing whole 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 requirement at one time, then whole feature will go to the queue environment. This is all about the waterfall model, sprinkle model. Waterfall model, sprinkle model, or is the most trending model is the agile methodology. There we are getting the information and we are implementing and QA and release, and the product will release in that manner. It's all about the HDLC. There are the 4 5 methodologies in the market which is um, more likely used in QA. Thank you. Next one is the what is agile, or define the agile. This question which frequently asked, why the agile methodology team member those are following the agile methodology in QA profile. That's it. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन द स्क्रम एंड स्प्रिंट. स्क्रम होता है जो हमारी कॉल और स्टैंडअप्स होती हैं, वो हमारी स्क्रम्स होती हैं, और स्प्रिंट होती है 15 days 17 days. Sprint, we develop a functionality within that sprint, that is called a sprint. We use sprint is all about the following the uh, specific days in agile methodology. We will implement this thing in this time period, that is called the sprint.
व्हाट इज़ द एस्टिमेशन इन स्प्रिंट? एस्टिमेशन होता है जैसे कि हमारे पास हम जैसे टीम में 25 मेंबर्स हैं, देर आर द 25 टीम मेंबर्स, तो 8 आवर्स का काउंटिंग होती है, तो 8 आवर्स से इतने पर्टिकुलर आवर्स बन जाते हैं, तो इतना हमारा एक इस स्प्रिंट का एस्टिमेशन है, तो उसे बोलते हैं एस्टिमेशन इन स्प्रिंट्स। हम आवर्स में या प्रोडक्टिविटी अपनी एस्टिमेट कर देते हैं एस्टिमेशन स्प्रिंट्स में। What is the sprint backlog? Backlog is the feature. We split that backlog in the user story. We work, everyone or developers work in the specific user story, implement that and move ahead. We test that user story accordingly. Backlog is just like a functionality. Simple. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स? ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये ना मैनेजमेंट लेवल के लिए होता है, नॉट फॉर अस जो 1 2 3 और एक्सपीरियंस होते हैं, दे विल डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये मैनेजमेंट इन द सेंस कि जो तुम्हारा लीड है वो सब चीज़ें गैदर करता है। इंसिडेंट रिपोर्ट, कोई भी इशू आता है तो इंसिडेंट रिपोर्ट की जाती है लीड लेवल पे या मैनेजर लेवल पे कि ये इशू आया है, क्यों आया है, क्या इसका रूट कॉज है, हमारी लैक ऑफ टेस्टिंग हुई है, वो दे विल एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग इन दैट। इंसिडेंट रिपोर्ट होता है कि प्रोड पे कोई भी इशू आता है ना, उसके लिए हम इंसिडेंट रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। लाइफ साइकिल रिपोर्ट होती है कि हम हमारी जो SDLC प्रोसेस है उस की जो रिपोर्ट है कि हमारे इतने बग आए, हमने इस यूजर स्टोरी के अगेंस्ट काम किया, या हमारी इस स्प्रिंट में हमारे पास 2 3 यूजर स्टोरीज थी, हमने उसके अगेंस्ट में काम किया, हमने इसका डेटा एनालिसिस किया, हमने नंबर ऑफ़ वर्क्स क्रिएट किए। ये सारी साइकिल रिपोर्ट्स में होती हैं। समरी रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट और उसकी यूजिबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। लेट्स सी, समरी में होता है टेस्ट समरी रिपोर्ट इज़ द क्रैक्स ऑफ द टेस्ट साइकिल दैट रिकमेंडेड दैट द प्रोडक्ट इज़ द एंड रेडी टू रिलीज़। हाँ, मतलब समरी रिपोर्ट इज़ द, जब प्रोडक्ट हमारा रेडी टू रिलीज़ होता है, इट कैन बी कंसिडर द फाइनल वर्ड रिगार्डिंग द एंटायर साइकिल, that is the summary report. मतलब we are saying about the final that project is going to release, then the entire cycle, we are saying about the entire cycle, finishing with the conclusive remark indicating the effectively testing project was carried out। मतलब कि जो हमने यूजर स्टोरी पे काम किया है वो इफेक्टिवली टेस्टिंग हुई है या नहीं है, या हमारा कितना स्कोप था। मतलब एक लास्ट मोमेंट के रिमार्क्स होते हैं समरी रिपोर्ट्स के अंदर। इट्स ऑल अबाउट द 3 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। तो बेसिकली इनको हैंडल तो सीनियर पर्सन करता है, बट यू शुड अवेयर कि कौन कौन से कब कब होते हैं। इंसिडेंट होती है कि हमारे प्रोडक्ट पे कोई इशू आता है। साइकिल रिपोर्ट होती है कि हम अपनी यूजर स्टोरी में क्या मतलब कि क्या है, कैसे है। और टेस्ट समरी रिपोर्ट्स के अंदर आता है कि हम एंड ऑफ द इफ़ एनी प्रोडक्ट गोइंग टू रिलीज वी आर रिमार्किंग अबाउट इफेक्टिवली रिमार्किंग अबाउट द यूजर स्टोरी, अबाउट द बैकलॉग और टिकट। दैट इज़ द समरी रिपोर्ट। व्हाट इज़ जीरा? जीरा गाइस तुम जानते ही हो, जीरा, बग जीरा, एडियो बोर्ड। एडियो बोर्ड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं या सारे एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली वी यूज़ फॉर द मेंटेन और maintain the tickets or management test management things, or we can SDLC process, we proceed for the SDLC process with this board, or we let moment. Basically it is all the words we use for maintain the backlog tickets, or we check the how much process we have done, how we check the estimation time, we check the all those things on the boards, Jira board, Bugzilla and ADO board, all the kind of board everyone can see, any team member can see the tickets. Ticket is under processing, under testing, under implement. That's why we use the maintain the SDLC process. How do you log defect in Jira? Simply guys, let's suppose you are working against with the user story or not against, आपको क्या करना है कि वहाँ पे create का ऑप्शन होता है, create a bug and you can choose the options like bug for you are creating bug improvement,
or incident ticket what you are creating. Or let's suppose you are defect, we are talking about the defect, तो आपको bug option choose करना है, then and mention the summary, like what the exactly issue you are going to create, then enter the summary, sprint, which sprint you want to fix that issue. Let's suppose you are going with the current sprint, so mention the sprint, assignee name, and description. All the str you will mention, like uh, expected, actual, with the screenshot gif you will attach, and it will create a simple. This is the main basic things required for the create a bug in the Jira. Second question guys, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लिंक बग्स विद द यूजर स्टोरी. सिंपल गाइज, यदि आपके पास किसी भी बग को यूजर स्टोरी के साथ लिंक करना है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक विद पेरेंट्स और लिंक विद यूजर स्टोरी. लिंक विद में मैनी मोर ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शन विल बी देयर. तो आपको हैज़, देन नेक्स्ट में लिंक विद पेरेंट के साथ है, तो आप कोई भी बग को उसके पेरेंट मतलब यूजर स्टोरी के साथ लिंक कर दे सकते हो. उसमें कुछ नहीं करना होता. यदि आपको यूजर स्टोरी नंबर पता है जैसे 9611, आपको वो एंटर करोगे, देन यूजर स्टोरी विल शो. तो क्लिक ऑन दैट यूजर स्टोरी, इट विल ऑटोमेटिकली एडेड यूजर स्टोरी विल बग will added in that user story. सिंपल, आपको यूजर स्टोरी नंबर पुट करना होता है और वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो पेरेंट, लिंक विद द पेरेंट, और एक सेकंड ऑप्शन होता है लिंक विद करके 2 ऑप्शन आते हैं. तो आप पेरेंट का है तो मतलब यूजर स्टोरी में जाके आईडी डालोगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ लिंक हो जाएगी. देन लिंक विद हैज़ का ऑप्शन जो आता है, वहाँ पे तुम्हें वो सारी आईडीज दिखती हैं जिनके अगेंस्ट में तुम काम कर रहे होते हो, तो वो उसमें से एक सेलेक्ट करोगे तो इट विल लिंक विद दैट यूजर स्टोरी, जो भी तुम सेलेक्ट करते हो. तो ऑप्शंस आते हैं, तो मैं बस देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑप्शन आते हैं, और क्रिएट करते हो बग तब भी ऑप्शन दिखता है, आता है उसमें. आप स्क्रॉल डाउन करते हो, ऑप्शन आता है लिंक विद द. define the functional testing is like we are focusing on the functional of the application. कि जैसे मान लो बैंक का एप्लीकेशन है, बैंक के एप्लीकेशन की मेन फंक्शनैलिटी क्या है. देखो बैंक के एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटी जो सिनेरियो बनते हैं बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में बनते हैं. हो सकता है उसमें यूजर पर्सपेक्टिव से कोई फॉर्म क्रिएट करना हो, कोई ट्रांजैक्शन करना हो सकता है कि यूजर का लॉगिन कराना हो, तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती हैं बैंक की फंक्शनैलिटी. तो हम वी आर जस्ट टेस्टिंग द core functionality of the application, flow of the application, that is called the functionality. This is very most important question. It doesn't matter कि you are QA or automation engineer, this anyone ask to you if you have a 3 year of experience. उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो inheritance, what is inheritance, what is construction, what is abstraction, what is polymorphism, what is all those common questions will ask frequently. You should have a knowledge about the theoretical as well as example. Already I have created the video on the same, please watch that guys, if that will help you a lot. ये कॉमन क्वेश्चन है. इफ़ यू आर सेइंग कि वी आर वर्किंग ऑन ऑटोमेशन, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है. आप कहोगे जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, व्हाटएवर. तो आप बोलोगे आपने उस लैंग्वेज को कैसे इम्प्लीमेंट किया. मान लीजिए कि आप जावा में इनहेरिटेंस जानते हो, तो आप अपने फ्रेमवर्क में कैसे यूज़ करोगे. तो सिंपल सी बात है कि आप इनहेरिटेंस को यूज़ ऐसे कर सकते हो कि आपने एक क्लास बनाई, आपने एक टेस्ट नाम से क्लास बनाई, उसमें सारे क्रोन्स और सारी वेब ड्राइवर और ये सारी चीज़ें एक उस क्लास में डाल दी. आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है उस क्लास को तुम कॉल कर रहे हो, या फिर उसमें उस क्लास में हमने अपने मल्टीपल फंक्शंस बनाए ड्राइवर्स के या फिर जो भी है, और उस फंक्शंस को आप दूसरे वहाँ अदर क्लास में कॉल कर रहे हो, या फिर आप उस क्लास को टेस्ट क्लास को कहीं अदर क्लास में एक्सटेंड करके यूज़ कर रहे हो. दैट इज़ वी आर यूजिंग द ओप्स कॉन्सेप्ट इन आवर फ्रेमवर्क. द सेम वे यू शुड एक्सप्लेन फ्रंट ऑफ द गाय कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो फ्रेमवर्क को, ओप्स कॉन्सेप्ट्स को. व्हाट इज़ टेस्ट एनजी. टेस्ट एनजी होता है कि हम जब भी अपना फ्रेमवर्क है और हमें अपने फ्रेमवर्क में टेस्टिंग करनी होती है, सॉरी जैसे हमारा स्मोक की जॉब रन हुई रखी है, ऑटोमेशन तुमने स्क्रिप्ट क्रिएट की हो, तो वहाँ पे आप लगाते हो कि बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर मैटर, आफ्टर मैटर, ये सारे जो एनोटेशंस होते हैं ना वो टेस्ट एनजी के लिए होते हैं. तो क्वेश्चन बनता है कि क्या हम बिना विदाउट टेस्ट एनजी के नहीं कर सकते. देखो टेस्ट एनजी से हमें करने का पहला बेनिफिट ये होता है कि हमारी जॉब यदि फेल भी होती है, मरी हमारी एंड टू एंड जॉब को रन करके हमें
दे देता है कि आपका ये वाला मेथड फेल हुआ है, बाकी के इतने पास हो गए हैं। टेस्ट एंजिन का पहला प्रॉफिट ये है। दूसरा प्रॉफिट ये है कि मान लो कि हम सीधे फंक्शंस बना के, क्लास बना के अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर भी देते हैं, तो उसमें क्या यूजेबिलिटी नहीं हो पाती, और इसमें हम ये चीज़ भी नहीं कर पाते कि हमें वो पहले ही रन करना है, हमें बाद में ये करना है। लेकिन इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है, आपने कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर दी तो आप उसमें एक फंक्शन लगा सकते हो, बिफोर मेथड। जैसे आपको ड्राइवर पहले लॉन्च कराना है तो आप करोगे बिफोर मेथड, बिफोर टेस्ट, टेस्ट रन होने से पहले ये ड्राइवर कॉल हो जाए, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, काइंड ऑफ थिंग्स विल बी रन फर्स्ट, देन आप इन एनोटेशंस का यूज़ करोगे अपने फ्रेमवर्क में, देन क्या है आपकी स्क्रिप्ट प्रॉपरली, आपकी स्क्रिप्ट रन होगी। और इसमें नॉट ओनली वन, इसमें पैरेलल एनोटेशंस भी होते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट, आपके पास 2-3 स्टेप्स हैं तो आप उनको पैरेलल रन कर सकते हो, पैरेलल सूट का यूज़ करके। बट आपको उसमें एक्सएमएल जाके चेंजेस करने होते हैं, देन यू कैन रन। यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है गाइस, वी टेस्ट अकॉर्डिंग टू यूजर पर्सपेक्टिव, user scenarios, like let's suppose how many number of scenario user can enter the create a form, तो आपको वो सिनेरियो बनाने होंगे और आप उस तरीके से आपको वो एप्लीकेशन एक्सेस करना पड़ेगा, आपको बैक एंड फोर्थ भी करना पड़ेगा। हो सकता है यूज़र वापस आए, हो सकता है यूज़र ये एंटर करे, हो सकता है यूज़र नंबर वाले फील्ड में email ID डाले, तो यू विल चेक अकॉर्डिंग टू यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी इज लाइक अकॉर्डिंग टू यूजर पर्सपेक्टिव। Thank you guys, now I'm sharing all those questions. We will create another video because it is too long, then we will explain another questions also. Thank you, please watch and like and subscribe this channel.